हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we want him to take rest. Rest details can be shared by Dr. Dange. Good morning. So today's update, we just saw him. Mr. Saif Ali Khan is doing excellent. And we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the do's for him, that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had a injury in the spine and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection. That's why his movements and also the restriction of the movements as well as movements of the visitors movements are being strictly restricted for his faster recovery, and he is doing excellent and he is recovering very fast, and God is kind. मी डॉक्टर नितीन डांगे, चीफ न्यूरोसर्जन. मी आणि लीना जैन प्लास्टिक सर्जन आणि कार्डिओलॉजिस्ट आणि अनेस्थेटिस्ट निशा गांधी मॅडम आणि त्यांची टीम मिळून आणि माझे 2 कलीग डॉक्टर कुशल आणि डॉक्टर मयूर या सर्वांनी मिळून आम्ही त्यांचं काल सकाळी लवकर सकाळी पहाटे ऑपरेशन केलेलं होतं. त्यांना ऑपरेशन नंतर ICUमध्ये शिफ्ट केलेलं. आज सकाळी अपडेट देण्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत. तर त्यांची तब्येत एकदम छान आहे. त्यांना आज मी चालवलं, तर काही प्रॉब्लेम नाही चालण्यासाठी. फक्त पाठीमध्ये खोल जखम असल्यामुळे इन्फेक्शनचे चान्स असून पाणी तिथून पाठीतलं जे पाणी येत होतं ते रिपेअर केल्यामुळे त्यांना बेड रेस्ट सांगितलेली आहे. म्हणून आम्ही त्यांना ICUमधून आज स्पेशल रूममध्ये शिफ्ट करत आहोत. ते आउट ऑफ डेंजर आहेत पण आणि स्टेबल पण आहे. अँड ही इज व्हेरी हॅपी अँड ही इज व्हेरी गुड अँड रिकव्हरी इज व्हेरी सॅटिस्फॅक्टरी. डॉक्टर निशा गांधी वापरण्यात आला होता तो एक्सोब्लेड होता की नक्की दुसरा कुठला शस्त्र होता? ते आम्ही तपासासाठी पाठवलेलं आहे, पण शार्प नाईफ. काय आत्ता तरी काही चान्सेस नाही. टचवूड, देवाची कृपा आहे की त्यांना काही आता रिस्क नाही, पॅरालिसिसचा काही प्रॉब्लेम नाही. त्यामुळेच मी बोललो की ते चालले, त्यांना काही पॅरालिसिसचा किंवा काही त्रास नाही आहे आणि ते अगदी नॉर्मल आहेत, बोलतायत, खुश आहेत. फक्त जसं मी बोललो पाठीच्या खोल जखमेमुळे आणि पाणी आल्यामुळे त्यांना बेड रेस्टची ॲडवाइस केली. एकदम छान आहे. तेच मी सांगतो, नर्व्स वरती इंजुरी नव्हती, नर्व्सच्या कव्हरिंग वरती. बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया. जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट. इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है. और मैंने जैसा आपको बताया बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं. वो खुद इतना इंजुरीज के साथ छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं. वो ऑटो में आए थे क्या? मतलब हमने तो अंदर उनको वॉक इन आते देखा. ही डिड नॉट इवन टेक द स्ट्रेचर,
He has come walked in the hospital. Like this. सर रिकॉर्ड का करेंगे स्टेटमेंट पुलिस का रिकॉर्ड का करने वाले स्टेटमेंट नितिन सर सर हिंदी में पुलिस जानना का चाहिए स्टेटमेंट Police will let you know. Police will let you know. See, पुलिस स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड we are here to update you regarding his medical condition. Rest of the things when he would be ready to record that. rest of the things, the agencies, whatever as per protocol, they are doing their job. We are here just to update you regarding he is doing excellent. We are shifting him out from the ICU to the special room, and that's a good news for all of us. As you know, Mr. Saif Ali Khan is recovering. He is doing excellent. Mr. Prashant Mehta. Prashant Mehta. Yeah. No doctor, just trustee. He is the permanent trustee of Leelavati. So as you Mr. know, Prashant. he's doing very well. The doctors have done a fabulous job. They're working round the clock, and they have also immediately got him out of the danger, and he's recovering well. And we would just request you just to give him that privacy, because he needs to rest and he needs to recover from the wounds, and he will be shortly out. So we are observing his progress. He is doing excellent and very well as per what our expectations are. So as per his progress, maybe we have advised him, as I just mentioned, bed rest. So if he is comfortable in at least 2 to 3 days, we will be good to discharge. If he progresses That will well. depend on his progress. सर क्या आप लोगों के अलावा फैमिली के अलावा कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर इस समय मांग पाए हैं मिलने का कुछ ऐसे आपसे रिक्वेस्ट किया गया है? As of now, they are investigating with the family. That's what we have been told. But what we are here to update you regarding We will not be able to comment that, on let their that, aspects. Legal authorities and police authorities opine about that. उस बारे में हमारे से Sir, how long will it take to recover completely? Maybe a week's time. सर हिंदी में थोड़ा बता दीजिए किस तरह से जो स्पाइनल तक गया था वो जो 2.5 इंच का था कि क्या हुआ पूरा एग्जैक्ट। So basically कल हमने रिलीज में बताया था कि उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, 1 गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी देर में हम उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट कर। डॉक्टर साहब डाइट वगैरह स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के अलावा जो 5 और इंजरीज है नेक के पास में और सिर पे, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सकें। He took the health premium from Niva Bhupa, and the hospital has asked him to pre-authorize the payment of 35 lakhs. Is it true, sir? we are not in a position to tell you the bills right now. Bills would be right now, there is just an estimate probably which has been asked by the doctors depending on the highest value. Let's say 3-4 सर्जरी होती है या क्या होती है, तो ये सब टेंटेटिव वैल्यूज रहते हैं। जस्ट टू गिव एन इंडिकेशन, द एग्जीक्यूटिव क्लास सर्जरीज एंड ऑल, द एक्चुअल बिल्स विल बी शेयर्ड विथ यू, दैट्स नॉट अ इशू, एंड इट्स ऑल ट्रांसपेरेंसी. Our hospital has everything fixed. You can see our tariff. Everything is there on the paper. It's there on tariff card. It is billed as per that. It is nothing के VIP है तो हम कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ये हॉस्पिटल में अगर आप भी उस पर्टिकुलर कमरे में रहेंगे तो जो चार्ज आपको हो सकता है वही चार्ज सैफ अली साहब को भी होगा। जो कैटेगरी ऑफ रूम आप चूज करते हैं उस पे आपका चार्जिंग डिसाइड होता है। शरीराला किती टाके लावण्यात आलेले, टाके किती लागले त्यांच्या शरीराला, सर त्यांच्या शरीराला टाके किती लागलेले आहेत त्या संदर्भात थोडी माहिती द्या। No, he is quite, so of course after the trauma when he came here, he was quite shocked. Anybody would be, with so many injuries, blood flowing on all around. And now after the surgery, and he is doing well. When he walked, he is quite happy, and the positivity which he Very has, calming the and way so he hero. came, as a
tiger or a lion, whatever we say, very strong, and he's proving to be strong now, and that positivity really works for him, and we hope and pray to God that he recovers soon. आपण ही लीलावतीच्या डॉक्टरांची पत्रकार परिषद बघत होतो. त्यांनी सांगितलेलं आहे की सैफ अली खान यांची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर आहे. 2-3 दिवसामध्ये डिस्चार्जचा विचार केला जाईल आणि कदाचित एका आठवड्याच्या काळामध्ये सैफ पूर्णपणे रिकवर होतील अशा पद्धतीची माहिती डॉक्टरांनी दिली. पाठीतली खोल जखम आहे आणि ती त्या जखमेमधनं थोडंसं पाणी येण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिलेला आहे असंही त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर ज्या डॉक्टरांनी पहिल्यांदा सैफला येताना पाहिलं त्यांनी असं सांगितलं की एखाद्या सिंहासारखा तो हॉस्पिटलमध्ये आला, रक्तबंबाळ अवस्थेत आला आणि त्यावेळेला सैफ अली खानच्या बरोबर त्याचा मुलगा तैमूरही होता. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.